gaseous state. चलो, first question, a manometer is attached to the flask containing NH3 gas, okay, has no difference in mercury level initially as shown in the diagram. ठीक है, after the sparking into the flask, it okay, sparking into flask, तो NH3 गैस है सिर्फ, और उसके आगे कुछ, ओह गॉड, सिर्फ NH3 है, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो sparking into glass, it has difference of 19 centimeter in mercury level in the two columns. Calculate percentage, ओके समझा. सो NH3 जो है, 2NH3, इट्स एसोसिएटिंग एज N2 plus 3H2, राइट, ये हो रहा है. एंड देन यू वांट टू फिगर आउट द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया. ओके, सो राइट, मतलब यहाँ पे सपोज कैसे समझाओ तुम्हें, लाइक इनिशियली ये NH3 था, राइट, और फिर यहाँ पे हाफ कर देता हूँ, इसको भी मैं हाफ कर देता हूँ. सो एक सपोज ये अल्फा डिसोसिएशन हुआ, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, और व्हाट वाज द थिंग वंस अगेन, लाइक ओके, पीवी का एनआरटी, प्रेशर इज चेंजिंग, ओह गॉड, not good. Okay, pressure is changing and volume is also changing, it seems. Is volume changing though? मतलब नहीं, एक्चुअली वॉल्यूम उतनी थोड़ी ना चेंज हुई. लाइक ये जो एरिया है, जस्ट अज्यूम कि ये ट्यूब का एरिया बहुत छोटा है, देन वॉल्यूम इज़ नॉट चेंजिंग, एंड देन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. आई गेस दैट मेक्स सेंस. इनिशियली जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसके बाद में कितना हो जाएगा अपने को देखना है. सो ये क्या, अल्फा/2 एंड 3/2 अल्फा. सो कंबाइन कर लो, कितना होता है ये, 4/2 अल्फा, विच इज़ लाइक 2 अल्फा, तो फिर 1 प्लस अल्फा हो गया, राइट. सो लाइक 1 प्लस अल्फा टाइम्स पी नॉट, इसका ये प्रेशर हो जाएगा, एंड देन तो अल्फा पी नॉट का डिफरेंस है, एंड दैट्स जस्ट इक्वल टू व्हाट, आफ्टर व्हाट, these it has a difference of 19 centimeter in mercury. Okay, so like 190 millimeters Hg, so like millimeter Hg, right. So alpha p naught ये है, and then we know that p naught is just 760 millimeter Hg. So अगर मैं डिवाइड कर लूँ, अल्फा इज जस्ट 19/17, राइट, दैट्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी, दैट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट. अपने को चाहिए परसेंटेज, सो लाइक 19/76 टाइम्स 100%, राइट. चलो फिर, दिस इज लाइक व्हाट, 4 and then 36, yes. So, oh, it's just that. It's just 19 times 4. So, it's just 1/4, which is like 25%. There we go. Next question. Two gases, NO and NO2, were introduced at the two ends of 1 meter long tube simultaneously. Tube of uniform cross section at the two ends. 1 meter long tube है, okay. उसके दो एंड्स पे तुमने क्या, ओके, लाइक ऐसे सिलेंडर्स में रखे हो गए, आई थिंक. So NO and O2 introduced किया है, okay. At what distance from NO end brown fumes will be seen? Okay, समझा मैं इसमें क्या. It's just like, oh God, it's just like ये assume कर रहे हैं कि जो सारे molecules है वो स्टार्ट में एकदम रिएक्शन शुरू कर देगा. यानी जब भी ये कोलिजन होगा, कोलिजन से अच्छा भी होना चाहिए, जब ये मीट हो गए, या लाइक NO और O2 जहाँ पे भी मीट होते होंगे, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन. दैट्स व्हाट दे आर अज्यूमिंग. ठीक है, इट्स नॉट दैट हार्ड टू फिगर आउट कि क्या होना चाहिए, बट स्टिल आई डोंट लाइक इट रियली. लाइक ठीक है, ये इनिशियली यहाँ पे हो गया, आई गेट इट, बट व्हाट इफ कि ये जो ब्राउन फ्यूम वाली जगह थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, एंड देन यहाँ पे हो गया, और वॉट एवर, राइट. सो NO और O2 जहाँ पे भी रिएक्ट करेंगे, वो जगह चेंज होगी ना विथ टाइम. हो सकता है, बिकॉज हु नोज, इट कैन हैपन. सो ऐसा कोई, ठीक है, इमीजिएट अपने को करना, इमीजिएटली कहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स मिलने वाले, राइट. एंड या टू एंड्स ऑफ अ 1 meter लॉन्ग ट्यूब, ओके. ठीक है, सो लाइक व्हाट्स द वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज लाइक प्रोपोर्शनल टू, व्हाट वाज द थिंग वंस अगेन, ऊपर था प्रेशर, एंड देन लाइक एरिया भी था. एक्चुअली डेल्टा भी चाहिए, मतलब द चेंज इन पार्शियल प्रेशर एज यू मूव फ्रॉम द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास टाइम्स टेम्परेचर, राइट. सो स्क्वायर रूट ऑफ MT, आई थिंक ये चीज़ थी, राइट. या सो अगर तुमने मेरे वीडियोस देखे होंगे, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट dN/dt.
sorry, it's dn upon dt. Oh, we just want the velocity, right? The average velocity. Yeah, okay. That kind of does make sense. So वो तो like just 1 upon square. Yeah, okay. It's like half mv square. Mv square is proportional to what? 1 upon t, proportional to 1 upon t, right? No, it's proportional to t itself. So v is proportional to square root of t upon m. That's one thing you can say, I think. Right? Yeah. Sure. So जो दोनों अपने हैं it's like proportional to square root of t upon m होनी चाहिए. Then accordingly तुम्हारी velocity कहाँ पे आएगी? Okay. I think I'm understanding it. थोड़ा अजीब है but चलो ठीक है. या मतलब मैंने एवरेज वेलोसिटी तब कैलकुलेट की थी और अब मैं भूल चुका हूँ, बट आई लाइक ऑलमोस्ट ऐसा ही था कि वो जो फैक्टर्स थे एक्स्ट्रा के वो सिर्फ न्यूमेरिक फैक्टर्स थे, एंड इन दी एंड इट वाज जस्ट दिस थिंग दैट यू हैव टू केयर अबाउट. सो फिर ठीक है ना, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, दैट्स अवर वेलोसिटी एक के लिए, एंड उससे प्रोपोर्शनल है. सो लाइक ये जो अपने दो चीज़ें हैं क्या थी वापस, NO एंड NO2, राइट? NO एंड O2, इनके मॉलिकुलर मासेस किस रेशो में? नाइट्रोजन का है ओके लाइक 14 प्लस फिर 16 हो जाएगा, राइट? सो लाइक ओके 7 प्लस 8 मतलब कि क्या 15, एंड दिस इज गोइंग टू बी 16. 15:16 है. और टेम्परेचर्स किस रेशो में है? सेम हो गए, या सेम हो गए. सो जस्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m, दैट्स हाउ v इज. सो राइट, v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 15, राइट? मैंने इन्वर्स कर दिया एंड स्क्वायर रूट कर दिया उसका. सो दैट्स वाई दिस थिंग. तो लेंथ जो रहेगी दैट्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बिकॉज v टाइम्स डेल्टा t इज द लेंथ जो कि कवर होगी, राइट? या सो लाइक हाउ डू आई इवन एक्सप्लेन दिस? वॉट एवर, दिस इज द थिंग्स लाइक इट्स जस्ट 4 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इस रेशो में होने वाला है. एनीवे, अपने को चाहिए क्या वैसे? At what distance from the NO end? Okay, ये NO के लिए है. So like 4 upon 4 plus square root of 15 times जो total length होने वाली है, and length is just 1 meters. So इतने मीटर, right? Yeah, that's the thing. So it's approximately just half a meter. So 50 का राउंड चाहिए, but exactly कितना, right? So उसके लिए अपन rationalize कर सकते हैं इसको. It's just 4 times of 4 minus square root of 15 upon 1. Isn't that right? Yeah, sure. और फिर so this is just 4 times of 4 minus 4 इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, and square root of 1 minus 1 upon 16, right? So 16 times of 1 minus square root of 1 minus 1 upon 16. Yeah, this looks correct. So binomial theorem यूज़ करके it's approximately just this thing. माइनस क्या हो जाएगा? 1 minus 1 upon 32. तो ये गया ये प्लस हो जाएगा, वॉट एवर. इट जस्ट दिस थिंग. सो इट्स लाइक 1 अपॉन, ओह गॉड, मुझे 1 अपॉन 2 नहीं चाहिए, थोड़ा सा और इसमें एक्यूरेसी दो मुझे. सो दी ओनली अदर वे इसकी थोड़ा और इसको, या फाइन. सो ये क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स. सो पहले क्या आएगा? 1 अपॉन 32. उसके बाद में अगला जो फैक्टर आएगा वो होगा इट विल बी निगेटिव. ओके, सो 1 अपॉन 2 एंड देन फिर निगेटिव 1 अपॉन 2, फिर अपॉन 2 लाइक 1 अपॉन 8 ऑफ 1 अपॉन 16 स्क्वायर. और ये निगेटिव होगा एक्चुअली में, सॉरी. और अगले के बारे में सोच भी ना, बिकॉज 1 अपॉन 16 क्यूब आएगा उसमें, तो वो तो भूल ही जाओ. इट जस्ट दिस थिंग. सो दिस इज लाइक 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 16 स्क्वायर विच इज़ लाइक 2 अपॉन क्या 256 था, इट्स जस्ट गोइंग बी लाइक 128. यप. सो 0.5 minus. And okay, we want this in centimeters. Fine. That's like 50 minus 100 upon 128 centimeters. So approximately 50 minus 1, which is like 49 point something. अच्छा इसमें बढ़ा दिया है इसमें. Okay, 50.8 दिया है. I get it. It should be this, but like NO and say it should be this thing. It should be less, right? Because NO में अच्छा नहीं, it should be more actually. Okay, minus square root of 15. Something's not right about this.
कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें। ओके सो ये जो मैं एक्सपांड करूँगा क्या होगा, ये इट्स लाइक 1 - 1/8, सॉरी 1/32 ये चीज़, एंड ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी, ओ तो वो नेगेटिव 1/16 का स्क्वायर तो होने वाला, सो इट्स ऑल्सो नेगेटिव ओवर हियर, ओ लाइक नेगेटिव 1/8 टाइम्स 16। अच्छा तो फिर ये जब नेगेटिव हो जाएगा इट्स गोइंग पॉजिटिव पॉजिटिव बोथ ऑफ दीज थिंग्स, तो एक्चुअली में ऐसा होगा 50+1 बोलना चाहिए, राइट। सो या मतलब थोड़ा 1 से कम ही है, बट राइट, सो लाइक 51 के अराउंड, 50 to 51, विच इज़ येस दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर। मैंने इतना पूरा किया ही क्यों, 44.8 कहीं भी इसके पास में नहीं आता है। सो या डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर आफ्टर द valve is left open for a long time in the apparatus represented in the figure. Assume that the temperature, okay, no reaction, CO2 O2 की, okay, temperature is fixed at 300 Kelvin, तो फाइनल प्रेशर आफ्टर द वॉल्व इज़, ठीक है, तो इसमें 2 लीटर और 2.463 एटमॉस्फेयर, और इसमें लाइक जो भी है उसमें 1 लीटर और ये है, राइट। तो ये 2 लीटर से क्या 3 लीटर पे चला गया, सो इट्स लाइक 2/3 ऑफ 2.463 एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से प्रेशर आने वाला है CO2 की वजह से, और फिर कंबाइन कर दो इसको, सो ये 1 से 3 लीटर पे चला गया, सो जस्ट 1/3 ऑफ दैट्स लाइक 1/3 ऑफ 4.926 एटमॉस्फेयर, दिस इज़ द थिंग। सो 1/3 ऑफ इसको डबल कर दो यार, इट्स जस्ट, नो इट्स द सेम थिंग एज दैट, राइट, लाइक ओके 8 और फिर हाँ तो ये सेम ही है, जस्ट 4/3 ऑफ दिस थिंग, 4/3 ऑफ 2.463 एटमॉस्फेयर आई थिंक, or like 2/3 of this, yeah that also makes sense. So yeah, just 2 times of इसको 3 से डिवाइड करो, just 1, फिर 0.19 के लिए 6 and then 12, so that's just 4, और फिर this is 2 atmosphere, which is like 3.2, हाँ ठीक है, so 3.284 atmosphere, which is this thing. Next question, the RMS velocity of hydrogen is this thing times the RMS velocity of nitrogen, अच्छा हाइड्रोजन की इतनी है नाइट्रोजन से, इफ़ T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन, हाँ ठीक है ना, तो लाइक स्क्वायर रूट ऑफ T/m, दैट्स व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। तो T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अच्छा TH2 और TN2 अपने को पता नहीं है, ठीक है, एंड इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स दैट, हाँ ओके, इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग। सो एक काम करो, H2 और N2 के लिए जस्ट से टेम्परेचर्स क्या है, T1 T2 ले लो, एंड अपने जो व्हाट वी कॉल इट, जो अपनी मॉलिक्यूलर मास रहेंगे वो क्या रहने वाले, इट्स लाइक 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का 1 है एंड इसका 14 है, आई नो दैट्स लाइक जस्ट 1:14 ही ले लो यार, क्या जा रहा है, राइट। सो रेशो ले रहे हैं अपन सिर्फ इसका डायरेक्टली, एंड स्क्वायर ऑफ टी, हाँ तो फिर जो वेलोसिटीज़ है इट्स लाइक स्क्वायर ऑफ T1/1 एंड जस्ट स्क्वायर ऑफ T2/14। इनका करना क्या वैसे, दिस इज, सो H2 की स्क्वायर 7 टाइम्स दैट है, सो स्क्वायर रूट 7 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 2, ओके T2/14, राइट, ओके दैट लुक्स गुड, which means T1 is just equal to T2/2, right? So T2 is just 2 times T1, T2 is bigger than T1, right? मतलब TN2 is more than TH2. This is wrong, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, और हाँ ये ऐसा ही है, इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज वो मत करो यार। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी एज डेंसिटी, ओके, so it's like square root of 3T/3RT/m, right, अपने को ये चाहिए, so like T/m is the thing, and we want the density, it's a weird thing, so like I don't like this particularly, PV equal to nRT अपन यूज़ कर सकते हैं, so I mean replace temperature by whatever, पर उसमें फिर अपने को प्रेशर लगेगा, I don't know, density, अरे अच्छा एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइन, ओके ओके ओके, पी वी को आर टी, राइट, आर टी को इससे रिप्लेस कर दो, जस्ट इक्वल टू PV/n टाइम्स ऑफ m, या अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, ये 3 हो गए जो भी है, लाइक V इज चेंजिंग
Okay, n times m, so number of moles left molecule, that is the mass. So m upon this sort of 3p upon rho, right? Yeah, exactly. This is our VRMS. तो p तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर जस्ट 1/rho. So d power -1/2, right? Which is this thing. Next question: if the pressure of a gas in a gas contained in a closed vessel is increased by this thing when heated by 1 degree Celsius, its initial temperature must be increased by 0.4%. तो प्रेशर को तुमने इंक्रीज किया when heated by 1 degree Celsius. अच्छा, और क्या ये इन अ क्लोज्ड वेसल और उसका प्रेशर इससे, ठीक है, तो पी वी = RT, तुम्हारा जितना टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ दैट्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर में इंक्रीज, राइट? तुम्हारा तुमने प्रेशर को 0.4% से इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर भी 0.4% से इंक्रीज़ हो गया होगा, और तुमने कितने 1 डिग्री सेल्सियस से हीट किया, राइट? ठीक है, ये तो ईजी है. सो 0.4% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 डिग्री, राइट? इट्स लाइक 4/1000 of T naught is equal to 1 degree Celsius. So T naught is, sorry, it should actually be in kelvins and whatnot, but yeah, okay, so ये टेम्परेचर एक्चुअली मुझे केल्विन में रखना चाहिए, because P is proportional to the absolute temperature. तो फिर ऐसा होगा, in kelvins our temperature is just equal to 1000/4, which is like 250, yes, so 250 kelvins, right? Yeah. Next question: the ratio of the rate of diffusion of helium and methane under identical conditions of pressure and temperature will be, okay, so pressure और temperature same है, just 1/m. cool. So क्या ये हीलियम एंड मीथेन, हीलियम का 4 है, मीथेन का काफ़ी बड़ा है, ओ गॉड. सो हीलियम 4 इज़ द मॉलिकुलर मास, एंड क्या ये मीथेन CH3, दिस विल बी 12 + 3 which is like 15, so 15 is the molecular mass, right? No, sorry, CH4 यार, 16, right? तो 16 is the molecular mass. जो ratio है just 1:4, right? So like we want the diffusion, ठीक है ना, 1/m is like 1/1:1/4, so 2:1 is the ratio. Next question: gas A is dissociated in a closed rigid container of volume something as per the following reaction. If degree of dissociation of A is 0.4 and remains constant in entire range of the temperature, then the correct P versus T graph is. अच्छा, समझा. Given R is this thing or whatever. So pressure is in atmosphere. ठीक है ना, तो अपने को बेसिकली क्या ढूंढना है, NR/V. अपने को V पता है, राइट, 0.16, और अपने को NR ढूंढना है, नो बिग डील. सो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जस्ट 0.4. A का हो क्या रहा है, बेसिकली A का हो रहा है 3/2B + C, राइट? तो इसका 1 - अल्फा, एंड देन इसका आ जाएगा 3/2 अल्फा, एंड देन इस इज लाइक जस्ट अल्फा, तो कंबाइन करके बस 1 + 3/2 अल्फा हो जाएगा. तो इसकी 0.4 डिग्री डिसोसिएशन है, जस्ट 0.2 × 3 जस्ट 0.6, सो 1.6 ऑफ जितने मोल्स थे इनिशियली, राइट? तो कितने 1 मोल था, राइट? सो दीज मैनी मोल्स विल बी एट इक्विलिब्रियम, राइट? ओके, तो अपने को n की वैल्यू मिल गई. व्हाट डू यू वांट रियली? NRT just equal to NR/V. So 1.6 times R is, God, I don't just hate this. वो लीटर्स में, राइट? इट्स लाइक 0.082 में ले लो, बिकॉज ये एटमॉस्फेयर का, आई नो दिस वन. ओके, अपॉन द वॉल्यूम 0.08 ही लेते ना, या राइट, ऑफ कोर्स हमेशा वही तो लेता हूँ, और क्या हो सकता है. सो अपॉन V इज़ व्हाट, 0.16. ओके, ऑसम. तो ये क्या है, जस्ट 10 times ऑफ दैट, so 10 times of this, like just 0.82. This is the thing, like, okay, 0.8 approximately. Theta is just tan inverse of 0.8. Looks good. So B is correct, I think. Next question: calculate the ratio of rate of effusion of O2 and H2 from a container containing 16 grams of O2 and 2 grams of H2. The rate of effusion of O2 and H2 from a container containing 16 grams of
O2 and 2 grams. So it's like it's proportional to the partial pressure upon, so like our dn upon dt thing basically. So partial pressure upon square root of m times t. So basically p upon square root of m. ये proportional है because temperature तो same रहने वाला है, right? Okay, and pressure is just proportional to the number of moles. Because PV equal to nRT. So V same है, you get the things which is n upon square root of m, right? So क्या रेशो होने वाला है? 16 grams of O2. Oh god, I just hate this. N is just the mass, अच्छा इसको कैपिटल M लिखो. N is just the mass upon the molecular mass और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ m डाल दो. So mass upon कैपिटल M की पावर 3 upon 2, right? चलो करते हैं फिर. So पहले क्या है इसमें? इसका मास कितना है? 16 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ O2 इज जस्ट 32 की पावर 3 अपॉन 2. ओके, इज टू सब देखो O2 इज टू H2 चाहिए ना. यस, H2 के लिए क्या है? 2 एंड देन जस्ट 1 जस्ट 2 एक्चुअली. सो लाइक अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 2. तो ये रेशो है. या ये हो जाएगा 8. यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, जस्ट 8. फिर यहाँ पे अपॉन 16 power 3 upon 2 I think is to 1, which is like 4 की power 3. So 8 upon 64 is to 1. मतलब ये 1 is to 8. This is the thing. Next question. Number of effusion steps required to convert a mixture of. Oh, and by the way, actually जो अपना ratio, अपना जो effusion rate रहेगा, that's like dV upon dt. But then PV equal to nRT. तो yeah, like V is proportional to n or something like that. Okay. It should actually be dn upon dt, right? So maybe वो कर रहे हैं या फिर dv upon dt, I don't know, but it's actually supposed to be yeah, dn upon dt. वो correct rate रहता है. But anyway, next, number of effusion steps required to convert a mixture of H2 and O2 from this thing to this. अच्छा, so by mass है ये. What is the effusion steps? What does that even mean? Huh? Okay, what does this even mean? Effusion steps? Okay, maybe एक जो है वो जल्दी इफ्यूज हो रहा है. You can use that fact somehow. Could be, it really could be. So इस ratio से we're going till this ratio. I don't know, man. मुझे पता नहीं तुम किस टाइप की प्रोसेस कर रहे हो. सो व्हाट डू यू मीन बाय effusion steps? आई डोंट नो. नेक्स्ट, 3 footballs are respectively filled with nitrogen, hydrogen and helium. If the leaking of the gas with time from the filling hole, okay, what? If leaking of the gas occurs with time from the filling hole, ठीक है, then the ratio of the rate of leaking of gas from 3 football, volume same है, pressure is not necessarily the same. अच्छा, pressure same है कि नहीं है? I think it's the same because yeah, it's the same as the atmospheric pressure, right? And I guess it should be like that. Yeah, it should be. Volume तो same है at least. And we'll assume कि pressure भी same है. It's just the atmospheric pressure. ठीक है. The ratio of the rate of leaking of gases from the 3 footballs in equal time interval is. ठीक है. Okay, I understand. So pressure same है, तुम्हारी volume same है. So P equal to RT. Temperature भी same होने वाला है. Okay. Pressure is proportional to the number of moles. And PV upon RT is the same for all of these. So pressure same, volume same, temperature same, right? तो तुम्हारे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी सेम रहेंगे. ओके, ऑसम. और ठीक है, वो भरने का तो करना क्या है? रेट ऑफ लीकेज ऑफ दी गैसेस, जस्ट प्रेशर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मास. अपने को यही देखना है, राइट? ओके, सो ये तो वैसे भी सेम ही होने वाला है, जस्ट 1 अपॉन रूट ऑफ m इज़ द थिंग. तो क्या ये N2H2 और हीलियम? सो N2 के लिए
1 upon square root of 14, then this is just 1 upon square root of 2, और ये हो जाएगा 1 upon square root of 4. इसको तुम रिड्यूस करो, it's just 1 upon square root of 7 is to 1 upon just 1 actually, and then 1 upon square root of 2, right? So अच्छा, इसको square root of 14 से मल्टीप्लाई कर डाल दो, then just square root of 2, square root of 14, square root of 7. This is the ratio. Well, yeah. So अच्छा, इसमें है ही नहीं. What? It should be there though. ये वन कैसे रहा है इन लोगों ने, कुछ है. हीलियम इज इट्स लाइक सॉरी इसका नहीं, एटॉमिक मास तो इसका 2 ही रहता है ना, सॉरी 4 ही रहता है ना. या हाइड्रोजन का 2 है, एंड देन N2 के लिए 14 नहीं है, 28 होना चाहिए. सिर्फ N का ओके, ये गलत हुआ, राइट. इट शुड बी 14 ओवर हियर. सो जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक्चुअली. ठीक है ना, एक काम करो, या ओके, दैट्स मच मोर अंडरस्टैंडेबल. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हर जगह पे रहने वाला है. वॉट एवर कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 14 से मल्टीप्लाई. 1 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो वो कहाँ पर है दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रिजिड कंटेनर containing 10 gram gas at some pressure and temperature. The gas has been allowed to escape. Do not consider any effusion or diffusion from the container due to which what? So mass अपने को दिया हुआ है 10 grams. Okay. Some pressure temperature, the gas is allowed to escape. Okay. From the container, due to which pressure of gas becomes half of its initial pressure and temperature becomes something of its initial. The mass of gas escaped is. टेम्परेचर 2/3 हो गया और प्रेशर जो है वो हाफ हो गया. PV इक्वल टू RT, राइट. सो वॉल्यूम सॉरी ओके, वॉल्यूम भी सेम है, राइट. तो N इज जस्ट प्रपोर्शनल टू P अपॉन T. तुम्हारा जो प्रेशर है दैट्स नाउ हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, और तुम्हारा जो टेम्परेचर है इट्स जस्ट 2/3. तो तुम्हारे मोल्स है दोज हैव बिकम 3/4 ऑफ द प्रीवियस वन. तो 1/4 गैस एस्केप हो गई. तो उसका मास कितना था, टोटल मास कितना था 10, 1/4 of that is 2.5 grams. Next question. Consider the following pair of gases. The relative rate of effusion of gases A to B under similar conditions is in the order. Okay, rate of effusion चाहिए in the same conditions. ठीक है, sort of M वगैरह. So A B है, okay, COO2 and God ये क्या है, यूरेनियम F6. What? अच्छा ठीक है ना, बस है कोई गैस, इसका 235, इसका 238 है. ये सब कितना घटिया है. हाँ, वट गैसेस टू बी अंडर सिमिलर कंडीशंस इन द ऑर्डर. समझ नहीं रहा हूँ मैं, तुम क्या बोल रहे हो. रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस A to B, राइट. एंड व्हाट डज दैट इवन मीन. आई थिंक तुम रेशियो की बात कर रहे हो, राइट. सो द रेशियो ऑफ रेट और समथिंग लाइक दैट, और वॉट एवर. तो फिर A का सॉरी स्मॉल a का क्या होने वाला है, इज जस्ट CO वर्सेस N2. तो COO ये तो सेम मास के हो जाएगा, राइट, बिकॉज 12 एंड 16 कंबाइंड जस्ट या 28, और ये भी 28 हो जाएगा. सो दिस रेशियो इज जस्ट 1. A के लिए रेशियो 1 है, B के लिए क्या है, O2 एंड O3 है. सो दिस इज लाइक 2:3, राइट, मास का रेशियो. सो जो तुम्हारी फ्लक्स का रेशियो इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बिकॉज यस ओके. और फिर C के लिए क्या है, मास का रेशियो कितना है, लाइक 235 एंड दिस लाइक F6, और फिर इसका 238. गॉड, तो इसका मास बड़ा है, राइट, विच मीन्स इट्स लाइक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ छोटी क्वांटिटी इज टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बड़ी क्वांटिटी. सो लाइक बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ बड़ी क्वांटिटी अपॉन छोटी क्वांटिटी, विच इज समथिंग बिगर देन 1. सो समथिंग स्लाइटली बिगर देन 1, राइट. सो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा. कूल. Okay, which is this thing. Next question. The pressure of a mixture of equal weights of two gases of molecular weight 4 and 4T is 1.1 atmosphere. अच्छा, तुम्हारा जो वेट है वो इक्वल है. ओके. वंस अगेन क्या था, तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, विच इज़ लाइक
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लाइक 1/m⁻³ से प्रोपोर्शनल रहने वाला है तुम्हारा रेट ऑफ इफ्यूजन, राइट? ओह अच्छा, मैं वो सब पूछना ही नहीं है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लाइटर गैस, सॉरी, the partial pressure of lighter gas in the mixture is fine, that's understandable. So equal weights and molecular weights ऐसे है, so this is like 1:1/10. okay, 10:1 is the mole ratio, so 10/11 of, अच्छा अपने को लाइटर चाहिए ना, सॉरी, या लाइटर गैस 1/, ओके लाइटर गैस एक्चुअली कौन सी होगी, ये वाली जिसका 4 ज़्यादा मोल्स जिसके, so 10/11 times 1.1, right, which is 1 atmosphere. Okay, next question. The density of gas A is twice that of B at the same temperature. The molecular weight of B is thrice that of A. The ratio of the pressure of gas A and B is, density of A is twice that of A, B क्या हो रहा है, डेंसिटी A की 2 है, इसकी 1 है, ठीक है. Same temperature, the molecular weight of gas B is thrice that of A. Okay, so the ratio of pressures of gas A and B will be, okay, so PV equal to RT, मतलब कि P is equal to the concentration times RT, right? So this times the molecular mass is just equal to our density, so like okay, rho upon m कर दो इसको फिर. So टेम्परेचर सेम है, आर कांस्टेंट है, फर्क नहीं, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर मास, दैट्स द थिंग. सो ये अपॉन ये अपॉन ये 2:1/3, विच इज़ लाइक, yeah, okay, that is the thing, of course. So 6:1, that's the ratio. Next, for this reaction, what is the percentage of NH3 converted if the mixture diffuses twice as fast as that of SO2 under similar conditions? ये रिएक्शन के लिए what is the percentage of NH3 converted if the mixture diffuses twice as fast as that of SO2 under similar conditions? Wait, that's problematic because, oh god, partial pressure upon square root of m, right? Of course. Like, oh god, this is not going good. This is just not going good under similar conditions. तो जो पूरा का पूरा मिक्सचर है, ओके, सो जो dN/dt टोटल है, दैट्स ट्वाइस एज बिग एज दैट ऑफ SO2, राइट? Oh god, must be some way to do it. So you know, with respect to SO2 तुम्हारे मॉलिकुलर मासेस क्या क्या अपन वो देख सकते हैं. पहले मॉलिकुलर मासेस निकाल लो. सो NH3 N2 एंड H2 और फिर SO2 है. सो NH3 का मॉलिकुलर मास कितना होगा, 14 + 3 विच इज़ लाइक 17, यस. N2 के लिए इज़ जस्ट 28, H2 के लिए क्या है 2, और SO3 के लिए इज़ 32 + 32 once again, so like 64. so with respect to 32 तुम्हारे मॉलिकुलर मासेस कितने हो गए, दिस इज़ लाइक 1, ये हो जाएगा 1/32, दिस थिंग इज़ 14 अच्छा वो तो वैसे भी कटने वाला है, इट्स लाइक 4 से डिवाइड करो ना. यार इसको ऐसे ही रहने दो, इनफैक्ट यू नो व्हाट, राइट. सो व्हाट इज द थिंग, इज लाइक प्रेशर अपॉन the square root of the molecular mass, that's the thing. Now the pressure is proportional to the number of moles, so you can just say like mole fraction times the total pressure. So mole fraction upon square root of m, इसका जो summation रहेगा for our mixture, that is equal to, so like xi, yeah, ये जो चीज़ है that's just equal to the mole fraction of, इसका तो एक ही है, and then upon square root of the molecular mass, so MSO2, right? Yeah, exactly. So we have figured out molecular masses कैसे कैसे, and then let's also do x values. तो ये m values है अपने को, अब x values भी चाहिए रहेंगे, इसका तो 1 होने वाला है. ओके, परसेंटेज ऑफ NH3 कन्वर्टेड कितना है अपने को ढूंढना है, राइट? इसका 1 - अल्फ़ा ले लो, ये बहुत गंदा होने वाला है, जस्ट नो दैट. फिर इसका हो जाएगा α/2 एंड जस्ट इक्वल टू 3α/2, राइट? तो अपने को अल्फ़ा ढूंढना है एंड इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, दिस इज़ जस्ट ऑफुल. सो ये तो ये x है कि नहीं है, नहीं ये है
ये x नहीं है, सॉरी. What you will have to do is divide by the total thing. So this upon 1 plus alpha. फिर ये चीज़ अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा. ओके, सो अल्फ़ा अपॉन गॉड 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा. और सिमिलरली 3 अल्फ़ा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक काम इसको अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन अल्फ़ा अल्फ़ा लिखो बिकॉज दिस इज जस्ट बेटर. ओके, ऑसम. अब जस्ट ये चीज़ करनी है अपने को. ओके, सो ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके, जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन 64 का स्क्वायर रूट विच इज़ जस्ट 1 अपॉन 8. ये चीज़ अपने को इन दी एंड करनी है. चलो करते हैं पहले इसके लिए NH3. सो XI इज जस्ट दिस थिंग अपॉन स्क्वायर ऑफ 17. दिस इज गोइंग टू बी सो ऑफुल. मैं ये भला क्यों ही करूँ, ऐसा मुझे क्वेश्चन आ रहा है बार बार. वन अपॉन 1 प्लस अल्फा एक कॉमन निकाल लो, यू नो. सो इसको उधर भेज दो विच इज गोइंग टू बी लाइक 1 प्लस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा. और फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ 17. फिर अल्फ़ा अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 28. ओके, प्लस 3 अल्फ़ा अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 2, राइट. ओके, दैट्स इक्वल टू दिस थिंग. तो अब अपने को अल्फ़ा ढूंढना है. हाउ एम आई सपोज टू, ओ गॉड, हाउ एम आई सपोज टू सॉल्व दिस. नहीं यार, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. कुछ तो भी अपने को अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा. स्क्वायर ऑफ 17 अप्रॉक्सीमेटली क्या है, स्क्वायर ऑफ 16 बेसिकली. सो लाइक इसको 1/4 कर डालो, जस्ट 1/4 माइनस अल्फा अपॉन 4. स्क्वायर ऑफ 28 इज अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर ऑफ 25, राइट. या, सो दिस इज जस्ट अल्फा अपॉन 10. स्क्वायर ऑफ, so 2 square root of 2 is square root of 8 which is square root of 9 approximately. आई नो बहुत बड़े बड़े अप्रॉक्सीमेशंस कर रहा हूँ, बट वॉट एवर. प्लस अल्फा दिस इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस अल्फा अपॉन 8. बट आई जस्ट वॉन्ट अ आंसर, सॉरी एन आंसर, नॉट मल्टीपल आंसर्स. तो ये उधर जाएगा जस्ट 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू, तो अल्फा अपॉन 4 प्लस अल्फा अपॉन 8 प्लस अल्फा अपॉन 10 प्लस अल्फा, राइट. तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3 अल्फा अपॉन 8. Like 3 upon 8 plus 1.1 times alpha. 3 upon 8 is कितना 0.4 approximately I would say. So this is like 1.5 alpha. 3 upon 2 alpha if you want. So alpha is just 1 upon 12. Yeah, this times 100% कर दो तो फिर ये हो जाएगा like 25 upon 3% which is almost 8%. तो 8% के पास में चाहिए अपने को, which yes it's the only thing. Next question. A gaseous reaction, something is carried out in something, okay, liter closed. Oh, it's the same as R value, right? Okay, so V is just equal to R. Awesome. In a certain unit system जो कि अपने को पता है ये gaseous reaction carry out हुई है in this volume liter closed container initially containing 1 mole of gas, so n equal to 1. Okay, after a sufficient time a curve of the atmosphere versus Tk is plotted and the angle with the x-axis was found to be 42.95 degree. अच्छा ठीक है. So like P upon T जो है that is equal to nr upon V. So nr upon V which is just okay ये तो just n. Yeah, so n की n final जो है उसकी जो वैल्यू रहेगी that is just what, that's tan of 42.95 degrees, right. So tan of 42.95 degrees which we don't know actually. Almost tan of 45 degrees, wouldn't you say? So like almost 1 I think. Yeah. This is getting awful. This is like 1 minus tan of, so 2 point, इसको like okay 43 बोल दो at max. So tan of 2 degrees if you want, and then upon 1 plus tan of 2 degrees. So basically almost like 1 minus 2 tan of 2 degrees, and 2 degrees is something like
2 times of, so a degree is just pi upon 180, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 times pi upon 180 which is pi upon 90. So ये चीज़ approximately इतना ही है because small angle approximations like 1 minus pi upon 45, that's what we have, right? ये slope actual में is just equal to n final, so n final is just equal to this thing 1 minus pi upon 45. And now time to figure out key, right? So हो क्या रहा है by the way 3a to 2b जा रहा है, right? Okay, degree of dissociation of a, so like 1 minus alpha आ जाएगा यहाँ पे, और b के लिए क्या होगा 2/3 अल्फा. So जो कंबाइन करूँगा मैं टोटल n क्या होगा अपना 1 minus 1/3 of alpha, and you know what this thing should be, right? It should be the same as that. So alpha is just pi upon 15, right? Okay, which is, oh अच्छा आपने कोई दिया था, गॉड मैंने ये पूरा क्यों किया फिर. It is equal to 0.8. हाँ, interesting. So like 0.8 is just equal to 1 minus alpha upon 3. That's what you're saying. Oh, okay. So 0.2 equal to alpha upon 3, alpha is equal to 0.6. Yeah, like 0.6 is the same. Wait, I thought alpha काफ़ी छोटा होगा. This is not the thing. Okay. So ये अपना approximation गलत हो गया क्या? नहीं यार, ये तो सही होना चाहिए था. अच्छा अगर मैं ऐसा करते तो क्या मिलता मुझे pi upon 15. Is that the same as 0.6? Like 3 upon, ठीक है ना, तो 0. God, no, it would be like 0.2 or something. This is not correct. हाँ ये सही नहीं होता. That's right, it would not be correct. That's weird. Whatever, next question. For a real gas, the PV curve was experimentally plotted and it had the following appearance with respect to liquefaction. Okay, choose the correct. I don't know, I don't care about liquefaction because वो चीज़ already बहुत गई हुई है. तो ये हो गया. Next, consider the following statements. If I'm starting to think कि शायद से ये actually 0.8 होना नहीं चाहिए. Whatever, but बाद में कर लेंगे. For now, just keep going. Consider the following statements. If the van der Waals parameters of two gases are given as, okay, choose the correct alternative. So अपने को A दिया हुआ है. Okay, what is this thing? Okay, ये B है and ये A है, right? कि क्या ये है क्या चीज़ आखिर, ये वैल्यूज़ क्या है मुझे बताओ. ओके ये B है, आई गेट इट, बट व्हाट इज दिस? आई थिंक इट शुड बी A ऑफ कोर्स. ठीक है. सो ओके VC, सो क्रिटिकल वॉल्यूम इज जस्ट इक्वल टू 3B. आई थिंक मुझे इतना तो याद है, राइट? सो 3B जिसका भी B बड़ा होगा, राइट, that will have a higher critical volume. तो इसमें of course x more than y हो जाएगा because yeah, so VC x is more than VCY. So A is incorrect. Okay, फिर God I don't remember इसको कैसे करते थे. TC और oh no मुझे वो पूरा वापस करना पड़ेगा. Fine, let's just do it. So P minus A upon V squared times V minus B equal to RT. So पहले तो क्या करना है देखो, partial right, okay, partial P upon partial V equal to 0 पहले पुट करना पड़ेगा, right? Okay, fine, whatever, just differentiate and get the thing done. तो जब इसको differentiate करूँगा just get like 2 upon V cubed A times V minus B plus P minus A upon V square, because remember partial P upon partial भी अपन ने 0 सेट किया अभी. So yeah, just equal to 0. So same temperature पे, that's the thing, right? So this is the thing. Yeah, और यहाँ से अपने को basically अच्छा अपने को एक रिलेशन मिला है. Fine. Oh, you can just get P through it directly, right? Okay, so P is equal to A upon V square plus, or I should say minus
minus 2a upon v cube, and then you got b minus b, right? Yeah. So v क्या था, just 3b, so like ये हो जाएगा a upon 9b squared minus 2a, और ये क्या है, it's just going to be like 2b upon 27b squared, sorry b cubed. So a upon b square common ले लो, it's just equal to 1 upon 9 minus 4 upon 27 I guess. So you can put 9b भी common ले लो, like a upon 9b square, 1 minus 4 upon what, 3. oh ये बड़ा कैसे हो गया, it's not supposed to be happening. ये कैसे हुआ, अबे ये 3 होगा ना यहाँ पे, सॉरी वेट नहीं, ये तो अजीब हो रहा है. ये कैसे हो गया, v cube, it should be like really small or something, but that's not happening. But how did this happen, यहाँ पे 4 आ गया, right? So 3b minus b, that should just be 2b. ये क्या हो रहा है यहाँ पे, that's like square of this thing, just cube of that. Okay, it's a smaller factor for sure. It's not making sense. अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव दिया विद रिस्पेक्ट टू v, राइट? सो यू गॉट दिस थिंग. क्या गलत कर रहा हूँ मैं, और इसका 1 हो जाएगा, राइट? या देन दिस शुड हैव वर्कड. ये क्यों नहीं काम कर रहा फिर? इट्स गिविंग मी समथिंग स्टूपिड, लाइक ये कैसे सकता है, जस्ट नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कैसे सकता है, इट्स जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस. to RT. Oh god. V molar should be 3b. That's our critical condition, right? Or is it not? Okay. You know what? Maybe it's not 3b. एक काम करते हैं, we'll just continue. Let's keep on differentiating, then hopefully अपने को सॉल्यूशन अच्छा मिल जाएगा. इसको पहले तो एक्सपांड करो. So just 2a upon v square minus 2ab upon v cube plus p minus a upon v square is equal to 0. वापस एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को, राइट? So what will that give us? ये तो 0 हो जाएगा whatever. And अच्छा, ये एक्चुअली एक काम करो, इसको सिंगल a का डालते हैं, that's better. Awesome. फिर अपन इसका डिफरेंशिएशन कर दिए. सो लाइक नेगेटिव 2a अपॉन v क्यूब्ड प्लस 6ab अपॉन v पावर 4, दैट इज इक्वल टू 0. सो v क्यूब हटा दो, इट्स जस्ट 2a इज इक्वल टू 6ab अपॉन v, मतलब कि v इक्वल टू 3b. दैट्स व्हाट वी गॉट द लास्ट टाइम एज वेल. तो इसको इसमें पुट करो ना, या ओके. सो पुटिंग दैट इन, जिसके लाइक a अपॉन v स्क्वायर्ड विच इज a अपॉन 9b स्क्वायर्ड, एंड देन माइनस 2 upon v, which is like, okay, 2 upon 27b cubed, fill that times a, and that times of v minus b is just 2b, so like 4 upon 27, and then you just had a upon b squared, so minus 4 upon 27 and then a upon b squared. This must be correct, but no, it's not, because ये negative दे रहा है अपने को, so कुछ भी तो गड़बड़ हुई है. How could it be negative? That doesn't make any sense. Negative pressure? No, this is just wrong. This must be wrong. ये पॉजिटिव था, सॉरी. सो अपने को हर जगह पे a की जगह पे नेगेटिव a पुट करना पड़ेगा. सो ये स्टिल 3b है, बट एक्चुअली इट शुड बी लाइक a की जगह पे नेगेटिव a पुट करो, सो इट्स नेगेटिव ऑफ दिस थिंग एंड पॉजिटिव, राइट? सो इट्स जस्ट इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, राइट? या फाइनली ओके, सो दिस इज इक्वल टू pc. Yeah, होता है कभी कभी. And then what else was the thing? Oh yeah, like RT is just equal to P, which is just this thing. So A upon 27P squared plus A upon VC squared is like just A upon 9B squared. And this times of V minus B, so just this times of 2B, right? So ये क्या हो जाएगा? ये है 3 just 4 A upon, हाँ ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा 8 A upon on this thing is just going to be 27 of P. Yeah, looks about right. Yeah, that's the thing. So अपने को TC भी मिल गया.
चलो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं. सो व्हाट दे वांट इज वी सी और वी सॉरी एक्स और वाई का वी सी चेक करो और एक्स और वाई का पी सी. पी सी अपन चेक कर चुके हैं एंड दिस इज यूजली रॉन्ग. सो पी सी एक्स, फॉर दैट यू जस्ट नीड ए अपॉन बी स्क्वायर, लाइक 6.5 अपॉन 56 ले रहा हूँ उसको. सो बेसिकली 65 अपॉन 56 स्क्वायर्ड वर्सेस, सो ये एक्स के लिए एंड देन वाई के लिए क्या है. वाई के लिए अपने को करना पड़ेगा 8 स्क्वायर सॉरी 80 स्क्वायर अप सॉरी 80 अपॉन 11 स्क्वायर. या दैट्स मोर लाइक इट. सो ये अपने को करना है. यस. नाउ हाउ डू आई डू दिस. Okay, 65 times 11 squared is 2. 80 times 56 square. अब तेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं. I just hate this. So ये क्या हो जाएगा. 65 is just 5 and then 1 carried on just 7, फिर 7 and 5 वापस लिख दो तो 5 6 8 7. So ये तो 7 8 6 5 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होने वाली है. दिस इज जस्ट टॉर्चर, क्योंकि ये पूरा अपने को वापस मतलब ऐसे कैलकुलेट करवा रहे हैं. So 6 times of 6 3 carried on, ये 3 और 0, it's going to be 0 3 carried on 25, so 28. Yes. Yeah, like ये क्या हो जाएगा 6 3 3 1, और फिर this times of 8 करना पड़ेगा पहले. So yeah, as you can see it's like much bigger than that, because 80 times 56 square and this is 65 times 11 square. 3, और ये तो ऑलरेडी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, राइट. या मतलब दिस टाइम्स 80, तो इसको कुछ ही कुछ कर डालेगा, राइट. यस. मे बी समथिंग्स रॉन्ग, हू नोस. फिर अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी. नहीं, ये 4 डिजिट का है एंड दिस इज ओके. मोस्टली ये 11 स्क्वायर और 56 स्क्वायर है, इसलिए डिफरेंस हो रहा है, राइट. या और ये भी बड़ा है ऑलरेडी, सो यू कैन सी कि हाँ ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, विच मीन्स कि y के लिए बड़ा रहेगा व्हाट अपनी पी सी की वैल्यू. सो एटलीस्ट b तो करेक्ट है. और c का क्या है टी सी, और ओके सो उसके जस्ट a अपॉन b चाहिए, तो ये स्क्वायर्स नहीं रहेंगे, बट स्टिल सेम लॉजिक है, बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर इन कंपेरिजन टू दैट, तो स्टिल बड़ा रहेगा. सो या दैट्स ऑसम. ओके, तो वेट में से तो क्या, या ओके दैट्स ऑसम. ओके, तो अपने को क्या करना है, बी एंड सी दोज आर द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, देन नेक्स्ट, द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द गैस CO2 इज दिस थिंग एट सर्टन टेम्परेचर. अच्छा ये हो ही क्या, तो ये वाला भी कर डालते हैं. For real gas, PV curve was experimentally plotted and had following appearance with respect to liquefaction. Choose the correct statement. At T equal to 500, अच्छा ये TC है and okay, what is this thing? अच्छा तो फिर ये इसकी वॉल्यूम फिक्स हो जाती है, राइट. तो यहाँ पे ये लिक्विड बन चुका है, अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो एट T equal to 300, P equal to 50 atmosphere, the state will be gas. Not necessarily, दो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, देख सकते हो. अच्छा नहीं, ओके, T equal to 300, राइट. ओके, नो इट वॉन्ट बी गैस, इट विल बी लाइक लिक्विड, बिकॉज तुम प्रेशराइज करोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा. नो, सो दिस इज रॉन्ग. At T less than 300, P bigger than 20, T less than 300 and P bigger than 20. ओके, तो या लाइक ऐसा. ओके, सो इट्स नेवर एक्चुअली गोइंग टू रीच दैट थिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्म अपना ऐसा होने वाला है. सो राइट, एट दैट पर्टिकुलर प्रेशर ये अपने आप लिक्विड ही हो जाएगा. ओके, और क्या है, T equal to 500, P equal to 40, T equal to 5. Wait, something's not right about this.
ये जो लाइन है इसका मतलब क्या? दिस प्रॉब्ली इज गैस, शायद से ये सॉलिड है एंड दिस माइट बी अ लिक्विड. हाँ, बट जब तुम्हारा जो तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है. नहीं, पी वर्सेस वी है ना, सो वेट, तुम्हारा प्रेशर बढ़ नहीं, तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है. हाउ कैन दैट हैपन? तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो, तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुम्हारा प्रेशर इट्स रिमेनिंग एट कांस्टेंट. कुछ तो गड़बड़ है इसमें. तुम कंप्रेस कर रहे हो बट उसका प्रेशर बढ़ नहीं रहा है. दिस कैन नॉट हैपन. नो, दिस इज कैन नॉट हैपन. व्हाट? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें. एज यू कैन सी, ये जो ग्राफ है इट डजंट मेक एनी सेंस. Yeah, right. ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं बनता. जस्ट यूज दिस ग्राफ. सो दिस इज आवर. ओके, ये इसमें भी वैसा ही है. डोंट गेट इट. सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसा होता है ना. सो गैस के लिए तुमने प्रॉपर आइसोथर्म ड्रॉ किया, आई गेट इट. बट देन लिक्विड के लिए ये तुमने क्या कर डाला? व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि वॉल्यूम कुछ भी रखो तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ कोर्स. नॉट गुड. दिस डजंट मेक एनी सेंस. नहीं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो सकता है. लाइक ऐसा होगा ही नहीं ना. क्यों होगा ऐसा? नोप, जस्ट नॉट करेक्ट. ठीक है, जो भी है. सो ये अजीब था. 20 द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ गैस गैस CO2. ओके, क्रिटिकल कंडीशन जो पता नहीं है, पता है बट डेंसिटी ऑफ गैस CO2 इज दिस थिंग एट सर्टन टेम्परेचर. तो इसका ऑलरेडी 44 मॉलिक्यूलर मास है. बेसिकली लाइक 0.1 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट. सो लीटर्स में क्या होगा? 0.1 सेंटी इज जस्ट 10 पावर नेगेटिव 1 डेसीमीटर. सो 10 पावर नेगेटिव 3 आ जाएगा नीचे. तीस मैनी मोलार, राइट. सो 10 पावर 2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है. ओके, सो टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है. सो 10 पावर नेगेटिव 2 इज द मोलर वॉल्यूम. सो विच इज दिस थिंग. हाँ पता है यार. ओके, इफ द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल r क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब इज प्रपोर्शन. ओके, sorry, what if r is the radius of the molecule, r cube in centimeter cube is approximately. ठीक है, ठीक है, समझा. So v is, this is the critical condition, right? It's like 3b is equal to 10 power negative 2. So b is just equal to 3 times 10 power negative 2. You know, oh god, liters actually. This is not nice. Probably 0. Okay, I'm understanding क्या हो रहा है, but it's just so weird. So like 0.1 mole per centimeter cube है, which is our concentration. So अपनी जो molar volume है that just equal to 1 centimeter, so like 10 centimeter cube per mole, right? And this is just equal to 3b. So like 3b is equal to 10 centimeter cube per mole. Yeah, right. So ओके, पर इन हर मोल के लिए बेसिकली. दिस इज काइंड ऑफ नॉट गुड. पर मोल यू आर सेइंग, राइट. सो क्योंकि अपने को सिर्फ एक एटम के लिए चाहिए, वी विल डू दिस. विल डू 6 times 10 power 23. सो एक एटम के लिए तुम्हारा जो v है दैट इज दिस थिंग एंड दिस इज इक्वल टू 3b, राइट. सो लाइक b इज वी नो जो तुम्हारा एटॉमिक वॉल्यूम रहता है एक मोल के लिए, राइट. दैट्स अ थिंग. सो ठीक है ना, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, उसको मैं बी बोल रहा हूँ अभी के लिए. दैट इज लाइक 3 times ऑफ दैट इज इक्वल टू दिस थिंग. सो यू नो 1/6 times 10 power negative 22, राइट. इट्स इन सेंटीमीटर क्यूब. सो अपनी जो एटॉमिक वॉल्यूम एक्चुअल में है इज इक्वल टू 1/18 times 10 power negative 22 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पर ये पाई वगैरह में लिखा है, गॉड. इज इक्वल टू व्हाट? 4/3 of pi r cubed, राइट. सो r cube इज इक्वल टू, ये 3 जाएगा, इज 6, तो फिर नीचे 4 24 जाएगा. pi upon 24 times 10 power 22.
in centimeter cube, right? Yeah. And n is Avogadro's. Oh, okay. We should actually use it like that. Shit. This 10 power 20. Oh, we should not have used this. Oh god. So फिर क्या 10 upon na था. It's just equal to 4/3 pi r cubed. So Avogadro's number n. ठीक है. So like r cube is just equal to 30 upon 4, which is like 15 upon 2 pi. And that is Avogadro's number. So 15 upon 2 pi, something like that, right? I can't see that anywhere. This is getting complicated. ऐसा क्यों हो रहा है यार? Oh sorry, it should be like 1/3 of this thing. So यहाँ पे 1/3 आएगा. So actually यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. It's just 10/4. It's just taking forever. So like 10/4 आएगा यहाँ पे. Right? Yeah. Which is just 2.5 upon Avogadro's number. और एक पाई भी आएगा. रुको, ये है क्यों नहीं आखिर? 25 upon pi Avogadro's number है, वो सब है, but not this thing for some reason. क्या गलत हो रहा है इसमें? It's really supposed to be just 10 upon the Avogadro's number, right? नहीं, मुझे नहीं पता. 2.5 upon pi n, that should be the thing, because oh okay, 0.01 mole per centimeter. Oh right, sorry. Then it should be like 100. So 100 upon 4 pi Avogadro's number, which is like 25 upon pi. Okay, that makes sense. ठीक है. Okay, my charging low हो रही है. Then that's it. So I'll see you guys in the next video.